नहीं था और इतने कोरोना और लॉकडाउन और ये सब इसके दौरान इतना कुछ सब लोग मायूस थे, तो इट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस कोरोना की वजह से जो करुणा रस निकला था उसमें हम हाथ सिरे से डालने की कोशिश कर रहे हैं। शेखर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. ये Thank you. वर्ष आपके लिए और सुपुत्र के लिए बहुत अच्छा। अभी मेरी उससे बात हुई थी। जी 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 एंड बहुत यू आल्सो मेकिंग अ, आई मीन वी विल बी सीइंग यू। जी, जी। व्हाट डू यू हैव टू से? I think- अर्चना जी से बात हुई थी तो कहा कि अगर टक्कर देंगे, कुछ बहस होगी तो मैं भी कम नहीं पढ़ूंगी। ऐसा इन्होंने कहा I था, spoke to मुझे her. तो कुछ और ही Yes, कहा था। yes. No, I think it's a great feeling to come back after a hiatus. और जनरली लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, पर मुझे ऐसा कहना है कि आई वॉज आउट ऑफ साइट बट नेवर आउट ऑफ माइंड। और ये एक लिटमस टेस्ट होता है, अगर आप थोड़े दिन तक बाहर रहें और लोग आपको ना बुलाएं तो कृपया ना जाएं। अगर वो चाहते हैं आप आएँ तभी आएँ, तो मेरे ख्याल से लोगों की चाहत थी जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। वापस आया इस वजह से भी कि एक बहुत त्रासदी हुई थी घर में, और उसकी वजह से फिर माँ बीमार थी। सो यू नो देयर वर मेनी अदर इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ वर्क। पिछले साल इसी वक्त 17 जून को आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद लगा कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ होगा नहीं, और मैं बहुत मायूसी से भर गया था। आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। लेकिन कहीं माँ की आवाज़ आई कि यू नो माई जर्नी इज़ फिनिश्ड, योर जर्नी कंटिन्यूज, तो आप जाइए और लोगों की ज़िंदगी में कम से कम खुशियाँ बिखेरी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। Shekhar ji, my question is to you again. Sorry Yes. to hear about your loss. So you are the face of this show since the beginning. जी। Does it come with a responsibility, and especially with the time that we are living in now? Yes, we are living in a very angry society, I think. There is rage and outrage everywhere, and we need to just chill. We need to relax. We need to sort of shake hands, be with each other, just chill out and have a smile. I think that's very important. And as you said, this show comes with a huge responsibility. Responsibility because, you know, as performers, as entertainers, as actors, we are all socially responsible for what we do and what we say and how we do it. So it's very important that you have to be a part of the show that is progressive, that is evolving. So in that sense of the term, when I look back and I see when Pankaj and Deepak approached me, I just wanted to know a little more about the contestants, and I was absolutely elated to know that they're from different walks of life. And the whole philosophy towards humor has changed. The sense of humor, which was a bit debilitating, which was a bit pedestrian, has now evolved into something very refined. And that humor doesn't necessarily mean a man becoming a woman or a transgender or indulging in profanities or obscenities. I think humor can be clean, and that's what we are emphasizing on. Very clean, healthy humor. I think television, you know, family viewing stopped long back with the advent of OTT people. It was a sort of a new poison that people got addicted to. And, you know, the expletives, the, you know, over the edge, over the top scenes. All of that was very exciting in the beginning, but I think people are coming back to their roots. People want to be part of the family, especially after the pandemic. They just enjoy just holding hands and being together, enjoying a program together. And this is one such show, I guarantee you, that's going to bring the families back together. Thank you. Archana ji, next is to you. Yeah, sure. With your name added to the show, any show for that matter, the show is already elevated with its approach. Thank you. How do you feel, or how do you select that you want to be a part of the show, since you bring in that sort of material and the quality to the show? There are very few comedy shows in India, sadly so. इतनी बड़ी आबादी में, और हरियाणा के लोग, इधर के लोग अलग अलग ह्यूमर वाले, you know, अलग फ्लेवर वाले, लेकिन शो वही एक हिंदी प्लेटफॉर्म, you know, so many channels only. So it is very sad that we have such few shows. So the choice is very limited for somebody like me. Sure. Then this is a no-brainer, because इनके साथ, बानी जय के साथ, दीपक के साथ, ऋषि के साथ, I've been doing Kapil Sharma show for 3 years. जब ऐसी कंपनी आपको अप्रोच करती है तो आपको एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. Right. You know, so this is a show which not one of the added reasons that I did the show was Bani Jay and Deepak and Rishi, who I'm very close to.
3 साल हमारी टीम ने जो बैक स्टेज भी जितना हंसा है, और एंड यू कैन सी दैट ऑन दैट स्टेज ऑल्सो Right. इन द कपिल शर्मा. No show can be that great and that much fun unless the team is having fun. So this is the same team which brought me this offer. And the concept of the show is Sone Pe Suhaga mere liye. So when I choose a show, like I said, the choice is very limited, but this was a no-brainer. I had to say yes because stand-up comedy मैंने बहुत साल से मतलब बहुत कम देखने को मिल रही है normal, apart from OTT. So this is a show जहाँ पर आपको stand-up comedy के साथ-साथ थोड़े-थोड़े elements of skit comedy भी, sketch comedy भी देखने को मिलेंगे. This is a flavor I didn't want to miss. I wanted the ringside seat and I said I'm going to watch and get paid to laugh again. Right. Thank you. Any other questions? नहीं, शायद इन लोगों को मालूम है कि बाहर नाश्ता लग चुका है. हाय अर्चना. या Hi. अर्चना, Yes. कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी हम मायूस होते हैं, कभी मानसिक हमारा जो स्टेबल है उतना ठीक नहीं होता. उस वक्त ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा बनना जिसमें आपको हंसना हो, कितना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार. What a lovely question you asked. Have to say that किसी और प्रेस वाले ने कभी ये पूछा नहीं है. But I have to tell you that Comedy Circus 7-8 साल जज किया था, फिर कपिल शर्मा शो 3 साल, अब ये तो 10-12 साल हो गए हैं that I've been sitting on some chair or the other. Thank you God. But ये कहना ज़रूरी है कि उन 10 सालों में किसी को लगता है कि वो 6 घंटे 8 घंटे हर एपिसोड में जो हंसना पड़ता है, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं आया होगा. I have to confess that there was a time when I walked, not once but a few times, that I walked onto the set of such a show and I thought आज तो मैं smile भी नहीं कर पाऊंगी. And I have sat on the chair. It's a job of a professional कि अगर आपको एक job दी गई है तो you have to do it. Also it has happened that I have lost my mother-in-law on the sets of Comedy Circus. तो ऐसा हुआ है कि अंदर से आप बहुत बहुत दुखी हैं, लेकिन a job is a job and the famous line says the show must go on. So we have cried inside and yet we have laughed because we have to entertain and that's just part of the job. But it's a nice question that you asked because it's really something very, very true and very painful for every performer. And not just me, there are many such performers who have to go through this. शेखर, आप कुछ ऐड करेंगे क्योंकि आपके साथ भी, आपने भी काफ़ी सालों तक. I actually, when I was working in Dekh Bhai Dekh, that's the time I found out that my elder son was terminally ill. और मेरे लिए as an actor to go out and just be a part of a comic show was very, very difficult because every time the phone rang, I thought there was an emergency. So you could imagine what I was going through. But I guess that as performers, you cannot bring your miseries and your grief to the set. वो आपका निजी मामला है और उसे आपको ज़ब्त करना होगा. And I lost my son while filming for Dekh Bhai Dekh. It was very, very extremely difficult for me. तो लोग शायद वो मुस्कान देखते हैं, वो हंसी देखते हैं, उसके पीछे का दुख नहीं देखते और शायद देखते हैं तो समझते नहीं. और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों में आगे ही इतनी तकलीफ़ें हैं कि वो शायद दूसरों का दुख बांटना नहीं चाहते, पर समझते हैं लोग. तो ये आसान काम नहीं है. मैं इसको एक काम की तरह लेता हूँ. मैं इसको एक चैरिटी की तरह लेता हूँ. अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप लोगों को बांटते हैं, आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं. तो उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर उधर हर जगह से थोड़ी खुशियाँ बटोर सकूँ ताकि लोगों को मैं वो बांट सकूँ, उनके साथ शेयर कर सकूँ. Yes, but it's been a difficult part, but as a professional, we have to just go on. I'd like to add to that. First of all, I'm so sorry for what you've been through, but I think आप लोगों ने जिस तरीके से handle किया during COVID, I have to say that for me, you guys were like frontline workers. We were at least sitting at home and doing whatever we could shoot at home, or we were coming on set where everything was careful and safe. But you guys were out there for the last 2.5 years, putting your lives at risk to bring us the news. So hats off to you guys, and I think you guys have done it better than us. Hi, Deepak, Sana from Indian Express here. The genre of comedy has changed over the years. If you have to point out what was the biggest challenges that you had to face while putting up a show like this?
Well, one had to just go back to basics. One had to just go back to classic, formats for us. There's no point in overcomplicating it because that's always a recipe for disaster. I've learned those mistakes over time. So just kept it very, very clean, simple. You've got a very small taste of what's coming up over the weekend, over the next many weekends. It is, I can tell you, it's extremely clean. It's very simple. It's not complicated. You just have to it's very simple. Just tune in and just unwind. That's the show. It's very, very clean. And for me, my job was very clear. This show started as a thought of what are we going to do when Kapil decides to go on a world tour. So it was just a discussion between Danish and myself and the Sony programming team. And, this is where it all started. My first call was to my, brother, friend, guide, and I immediately called Pankaj. He is very difficult to convince, very difficult to get started. But it's very difficult to convince, but once he's convinced, it's very difficult to stop. Absolutely, that's what was my line. So really, somebody without whom this show could not have been made. There is no doubting that. I mean, the pillar of strength of this show, the guiding force is him. My relationship with him starts as back as when we started our careers in Channel V. So I know him literally from those days. So there is no other call I made. I made the first call to him, and immediately together we called Shekhar, Archana, and the rest of the team to just put up a great, simple, clean show. And I can proudly say that, we've just stuck to simple, basic rules, and that's where we are. It's like a massage chair. Once you have switched on the button, you don't have to do anything. The chair does the rest. Deepak, would you consider Archana also to be one of the loyalist to you? Because after this, I believe she is going to join for Kapil Sharma's next show. Well, she has said enough, and it puts added pressure. Every time I've reached out to Archana, it has to be for something which is a great show and a compelling show. And I'm very happy she considers, our company, our friendship, so important that she immediately, signs up for it. And I must say the same thing for Shekhar. I called him many years back, both Pankaj and I, for another show. And many years later, we are now standing all together, making another show of laughter. So, it puts a great sense of responsibility on me personally when we are taking out a show or a franchise or a IP out to somebody. It needs to be a memorable experience for this entire team. And I must say, we have just started. It's already very memorable. Absolutely. We're getting a great feeling about what's really coming up. And I must really thank all of you. I must thank the Sony team who have really let us alone with the show, and left us alone. trusted us completely, and I have a great equation with them. I must thank the rest of the team behind this. There's a big army behind this. I can't name everybody here, but तोप तो लगा के रखे हुए हैं. There's an army behind that. Yes. yeah. So each one has been very, very integral to bring us to this stage, and I'm sure it's just. I'm getting a feeling we're just starting off. So I have to add one thing here, that to make a comedy show, it is very important that the creative team is left to do what they know best. For that, you need a channel that supports that creative team, which has faith in that creative team. And I think Sony has always stood for that. Absolutely. They have always given us great comedy shows, as is evident from Comedy Circus and Kapil Sharma show and this one, which is going to prove that, this is really, again, history in the making. So Sony really does support the creative team. It has always given us the freedom to do what we could do our best, in. And so thank you, Sony, for a lot for that. As they say, the show must go on, so must the laughter. And Sony strongly believes that the laughter must go on. And between Deepak and Pankaj, and between Deepak and me, he just told me very categorically, this show is going nowhere. It's going to be there for the next 5 years. But either way, Archana is going to be with us. Very Can I reverse the position? Can I ask one question to the press, please, if you allow me? If I can have the latitude to do that, can I? May I? Yes? Can I ask the question? ये आप लोग हर रोज जाते हैं नए नए शोज में, बैठते हैं इसी तरह से, देखते हैं, झेलते हैं जो भी.
और फिर उनसे वही वही सवाल करते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ऐसा होता है कि बहुत हो गया यार, हर शो में जाके बैठना, सवाल पूछना, वही वही सवाल, इसमें नया क्या है, यहाँ आप क्यों आए, इसका हिस्सा क्यों बने? एज जस्ट बिकम लाइक अ वेरी मैकेनिकल थिंग फॉर यू पीपल, और कहीं ना कहीं आप लोग जज्बाती तौर से जुड़ते भी हैं। मतलब एक इंसान जिसको खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको इतना खाना देंगे और दिन में 10 बार देंगे तो वो तो कहेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, बैठ जाएगा, खाएगा नहीं। तो आप लोग सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, या ऐसे ही कि जैसा मैंने शुरू में कहा, ओफो एक और नया शो? Is it like that? Do you feel bored doing the same thing? Is it become a perfunctory job? हाँ, आप कोई जवाब देंगे? लिपिका जी को ये जवाब देना चाहिए. She is the senior most here Yeah. for 35 years doing the same thing every day. हाँ, so every day 35 years. 35 years. 35 साल से आप कर रही हैं लिपिका। आप बताइए कि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक ये हो गया है, बुलाया है तो जाना है First और of all, बैठना है। a round of applause. 35 years. Wow. आप जवाब दें लिपिका जी। इसका जवाब मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जब परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं आप लोग थोड़े मुझे मायूस दिखे। मायूस नहीं, मतलब ये कि आप आए हैं, बैठे हैं, आप लोग इतने पार्टिसिपेटिव नहीं लगे जितना दिखना चाहिए। तो क्या वजह है कि मतलब यू फील दैट द मीडिया हैज़ अ वेरी सीरियस प्रोफाइल, तो हम लोग हंसना नहीं चाहिए, हंसने से हमारी संजीदगी कम हो जाएगी? या ठीक है, ऐसे शोज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें मतलब आप लोग स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, बट दैट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। आप लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं जो ताली बजा सकते हैं, तो वो तालियों की कमी या वो पार्टिसिपेशन क्यों कम नजर आता है? Are you bored? Are you guys bored? No, the second question, the answer is our boss is constantly asking when are you coming back to release the page. So that's the reason. हाँ, तो नीड द पेज में कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर हो जाते हैं, जो हम इतनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। योर माइंड इज ऑन योर बॉस एंड बॉस इज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय यू और योर वर्क। तो ये आप लोगों का आदान प्रदान चलता रहता है, तो हम यूं ही परफॉर्म करते हैं? नहीं, हम लोग बाकायदा हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ यू हैव सीन, तालियां भी बजाई हैं और हंसे भी हैं। और शेखर जी, आपको मैंने फेमस स्टूडियोज से जानती हूँ, जब वहाँ ऑफिस था। When I was not so famous. No, you were famous. Thank आपकी you, वो फिल्म thank you, थी। thank you. I Yeah, I don't remember Jungle Queen or something. Jungle Queen? That was her. Mine was Utsav, which I started. Connected to jungle or something, and I've been Jungle? talking to you continuously. I've been lost couple of times in my life, but not in a jungle. And I'm Lipika Verma. I've met you. I've spoken to you. I'm sure, of course. Yes. हाँ. Yeah. पर ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग Your son was in my school, Utpal Sangh उत्पल School. संघ, yes, yes. Yeah. जी, Okay. जी. Now coming to this, आपने क्या पूछा था कि हम लोग monotonous that's a नहीं very good होता, question, नहीं. हाँ. This is a very interesting. You know, I'm passionate about the job, जी. and I'm not doing for money. Yes, money comes to me, and No, coming and sitting and doing this. जी. We enjoy it. And सवाल का जहाँ सवाल पूछने की बात आई है, तो आप लोग अगर हमें और मतलब आपका शो है तो शो से कनेक्टेड सवाल पूछने पड़ते हैं। तो जब जी, आपसे नहीं वो मैं नहीं कह one-on-one रहा। करेंगे, मेरा सवाल तो का जी ये है कि कहीं न कहीं एक ही चीज हर दिन 4 बार करते कहीं बोरियत महसूस होती है? बिल्कुल कहीं नहीं, वो उत्साह रहता है, वो पैशन रहता है आपको? Yes, we are passionate about the job. Everybody, I think, even the Is everybody very passionate about Yes, this? आप लोग हाँ even the कहेंगे? younger एक बार हाँ, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि आप लोगों की तालियों की आवाज नहीं सुनाई देती। हर वक्त निवेदन करना पड़ता है, गुजारिश कि And- मुस्कुराइए। नहीं। और अब तो कम वक्त ये मास्क आ गया, पता ही नहीं चलता पीछे एक्सप्रेशंस क्या हैं। Hats off to the younger generation. जी, I young- must tell you that I imbibe their energies, you know. जी। They are so energetic. All the young बस they are very energetic. एक ही गुजारिश है, show it. I would like to add to that. In fact, so Thank many you. of you, I recognize your faces. I remember there were days when I have flown out in the night, late at night. I've reached elsewhere. I finished my event and I've flown back in and I've come on set and I felt so exhausted that I did so much. But you guys have been there every step of the way before me to capture me doing what I'm doing. So I think you guys give it your heart and soul, and I don't think there's any doubt about that. Wow. Any other questions? Yeah. So, Last this one's question. for Pankaj ji. Yes. So, bringing back a legacy that we've already seen once, and now that it's going to have a different flavor, how exciting is it for you, and what goes behind? As every viewer would love to know. See, coming back to this franchise after so many years, I just, what I saw
was that the standard of humor, the style of humor, lot of things have changed. So that was really exciting for us while working around it. पर यूं कहो तो कहने को कोई भी बात दुनिया में नई नहीं, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देती है. तो हमने इस बार अंदाज़े बयां बात बदल दिया है और उम्मीद है ये अंदाज आपको पसंद आएगा. शुक्र है आपने जजेस नहीं बदले. हाँ. नहीं बदल तो दिए, मैंने तो नहीं किया था ये पहले. All right. Okay, done? Yep. Thank So you, guys. once thank again, you, thank thank you. you to Haji, all of Haji. you. You Yeah, have been thank you. a fabulous audience, and I hope you. All right. Silence. 1, 2, 3, start. 5 minutes, Yola. So Archana ma'am and sir, we would like to ask you that एक बार फिर से India's Love Champion start हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार अलग देखने मिलेगा? कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनकी फ़लसफ़ा सब कुछ अलग देखने को मिलेगा. अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहज़ीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं. तो ये सब अलग देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर द इयर्स इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है. तो सोच भी बदली और किस तरह से करते हैं. OTT प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है. तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग होने वाला है. I feel the flavors are very different. हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी. तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ. सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है. Selection करना कितना easy है? Yeah, I was going to add कि being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग varieties भी है, लेकिन उसको understand करने और to enjoy it also आप कहीं से भी enjoy कर सकते हैं. और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की को सिलेक्शन करना, लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड. तो उसमें कभी बोलता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है. तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है. आंखें भी अच्छी हैं, नाक भी अच्छा है, होंठ भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है. आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर और उसमें कोई प्रोफैनिटीज़ नहीं है, ऑब्सैनिटीज़ नहीं है, अश्लीलता नहीं है और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है. तो अगर ऐसे समझे कि अगर 75-80 साल के बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया. तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए हैं वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म करें. मेरे लिए बहुत अहम है. आपसे पूछना चाहेंगे, Yes. कपिल में देखा है, हाँ. कपिल में जिस तरह से आप एक्ट करते थे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा. हाँ. और अब जब कपिल के बाद ये शो होस्ट करना और इसकी जो होस्टिंग की पावर है वो आपके पास है, तो कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स क्योंकि जैसे आपने कहा कपिल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं. सो मैं खुद को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ. बट here it's an amalgamation of both things. I started out hosting the IPL and hosting is where I am the most natural and you know it's what comes easily to me. मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं, Mom, please bring the coffee. We are all waiting in the living room. So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me, and I'm very, very excited. And Now she's in IHL, Indian Humor League, and she's doing a wonderful job. thank you. So after lockdown and all, बहुत से लोग जैसे डिप्रेशन और ऑल जी. लॉकडाउन के टाइम, सो एक
बार फिर से ये वैसा ही दौरा फिर से सुनने में आ रहा है, न्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग, केसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ये लाफ्टर चैलेंज उन्हें कितना हंसा सकता है? बहुत 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 हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए, क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं, उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें। अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने की। एंड ऑल्सो टू टीच पीपल टू टेक थिंग्स लाइटली। हम लोग, डोंट यू एग्री विद मी आर्ची, हम लोग बहुत खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ, दिस इज अ शो दैट विल टीच यू टू लाफ एट योर सेल्फ, एंड आई थिंक आर्ची इज समवन हु हैज बीन टीचिंग अस ऑल हाउ टू डू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैम फिर से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो आपकी क्लिप्स देखने को मिलते हैं, आपकी जो भाग्यश्री वेल वो तो मेरे घर का सिलसिला है, तो इस शो से कुछ इसका संबंध नहीं है, लेकिन देखिए जब जब कोरोना आया है तब हमने अपने घर में वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है। तो भाग्यश्री एंड आई यूज्ड टू मेक दोज वीडियो तब। अब देखिए वापस कोरोना आ रहा है, सबने मास्क पहन लिए हैं, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वजह से नहीं मैं भाग्यश्री के साथ वीडियोस बनाऊँ, बट शी इज़ अ लवली पर्सन और उसने कितना एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को। एंड इट्स सो लवली टू सी समबडी इज़ वर्किंग इन अ होम। आप देखिए वहाँ पर भी टैलेंट है यार, ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे ही कितने लोगों को ये शो जो है एक मौका दे रहा है। ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कोई बहुत उनकी नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, लेकिन टैलेंट अगर आप देखोगे तो कमाल है। सो आई लव बीइंग सपोर्टिव ऑफ टैलेंट which is so new, so genuine and so raw. I think I should also add to it that in COVID, the social media, kind of went crazy, and people thought that, it's only for the young ones. But there are people like Archie that kept us all so entertained. You have become like a social media queen. I'm not kidding. मैं उनके videos देखते हैं inspiration के लिए आज क्या करूँ. So I think hats off to I you. must start the videos again then. Yeah. यार इतने सारे लोग Of देखते हैं। course. तो उस दिन ना वो RRR की रामचरण and junior NTR had come, and they said, how was Bhagyashree? I said, hey. They said, yes, we watch it. Her videos. I'm like, oh my God, my house help is a superstar. मैंने इतने बड़े superstar. तो मैंने भाग्यश्री को जाकर वापस बोला, मैंने तुझे मालूम है वो हजार करोड़ है, कितना मैडम कितना? मैंने कहा हजार करोड़ करती है उनकी फिल्में, और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भाग्यश्री, swear God, सच्ची ऐसा बोला। She was so happy. So I think I must make those videos. For sure. Thank you guys. लास्ट क्वेश्चन गाइस, then we can start. लास्ट एक फैंस को क्या कहना चाहोगे, जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहोगे, और एक क्या मैसेज मिलने वाला है सभी ऑडियंस, सभी व्यूअर्स? ऑडियंस को ये हम सब मिलके ये कहना चाहेंगे कि देखिए ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो हम बहुत सारी चीज़ें दिनचर्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उस तरह से हंसना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जब ऑडियंसेस ये कंप्लेन करने लगती है कि अब कॉमेडी शोज़ में बहुत अश्लीलता आ गई है, अब वो पुराने जैसा नहीं रहा, पुराने शोज़ बहुत कमाल के रहते थे, अब क्यों नहीं है, OTT में इतनी गालियाँ, इस शो में ये खराबी, उस शो में खराबी है, तो दायित्व जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई शो ख़राब लगता है उसका बहिष्कार कीजिए, डोंट प्रमोट इट। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, ताकि हेल्दी क्लीन ह्यूमर या जो कोई भी विधा लेके कोई सामने आ रहा है वो बाहर आए। सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आप कंप्लेन भी करते हैं फिर उसको देखते भी हैं, इस तरह से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो कृपया जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ संदेश भेज रही है सोसाइटी में या देश में, उससे दूर रहिए। थैंक यू।